Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रो तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज टॉपिक रे आमे डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म विषय रे पढिबा देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक मेनली हला आयरन निकेल कोबाल्ट से माने जो प्रॉपर्टी शो करंती एक्चुअली it is same as that of your paramagnetic materials but to a larger degree of extent. Okay, like paramagnetic substances, the atoms of ferromagnetic substances have permanent magnetic moments. Okay, emanukro atom re permanent magnetic moment rohithay, but in this case of ferromagnetic substance the magnetic moments of individual atoms are coupled to the neighboring magnetic moments and it is very strong, okay, through exchange interaction. Okay, exchange interaction द्वारा गोटे strong magnetic moment create होता है coupling है कि individual atoms रो with that of the neighboring magnetic moments. Now large number of magnetic dipoles get aligned in the same direction and they form large number of small effective regions जहाँ को कि हमें डोमेन बोली की कहू. Okay, so डोमेन हैला large number of magnetic dipoles जोटा कि समान डायरेक्शन रे align करिथिबे. Okay, and they are forming large number of small effective regions. Okay, and these domains are supposed to exist throughout the magnetic material as shown in figure. एठी देखो फिगर रे this one. So एठी देखि पारथुबो एठी एटा होची गोटे डोमेन एटा गोटे डोमेन. सो एठी प्रत्येक ए जो बाउंड्री भितरे आमे गोटे गोटे डोमेन देखुछु. सो प्रत्येक डोमेन भितरे देखो एठी गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे मैग्नेटिक मोमेंट रो अलाइनमेंट हेची प्रति डोमेन भितरे. ओके, ठीक अछि. अच्छा, नाउ एठी ए कहूची जे each domain has a volume of the order of 10 to the power minus 2 centimeter cube or it is ranging to 10 to the power minus 6 centimeter cube also. Okay, so 10 to the power minus 2 ru 10 to the power minus 6 centimeter cube porjanto yara volume ta range karuchi and it may contain about 10 to the power 16 to more atomic dipoles. Okay, acha, each domain is magnetized to the degree of saturation in one direction. Okay, jemti ame dekhila, and the overall magnetization of ferromagnetic specimen is given by the sum of the domain vectors. Okay, ताले ए जते सबु टोटल डोमेन वेक्टर अछि तारो हमें वेक्टर सम जदि कर देबा ताले हमें ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन ए फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन पई पाई परिबा. ओके, हाउएवर नॉर्मल स्टेट रे गोटे सब्सटेंस जेतेबेले हमें कि किछि भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करू नाहु, in the absence of external magnetic field the different domains are randomly distributed as you can see in this figure, hence their resultant magnetic moment ए सबु मिसिकी cancel ही जिवो and it will become 0. Okay, so ये हैला in the absence of external magnetic field. Okay, but however ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ weak magnetizing field apply କରିବା ताले से जो डोमेन रो साइज टा चेंज हबो. ओके, माने for the magnetic moment of the specimen to increase the boundary of the domains are displaced. Okay, so एठी देखो फिगर रे फर्स्ट फिगर रे एठी जो तळे एटा होची रैंडम माने in the absence of magnetic field तापरे
आमे जेतेबेले मैग्नेटिक फील्ड गोटे वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करछु ताले देखो डोमेन रो ग्रोथ होउची ओके सो बाउंड्री रो एठी डिस्प्लेसमेंट होउची डोमेन रो ओके आउ এই जो बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट केमती हबो आमे सपोज एई डायरेक्शन रे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूछु ताले सेई डायरेक्शन रे जो जो डोमेन भितरे मैग्नेटिक मोमेंट रो डायरेक्शन थिबो तारो साइज डिस्प्लेसमेंट बढ़ी बढ़ी जीवो कंपैरेटिवली तार उल्टा डायरेक्शन रे जोटा थिबो लाइक दिस एटा कमी कमी जीवो एमानकर साइज टा ओके सो एई जिंसटा एठी कहिची जे for the magnetic moment of the specimen to increase the boundaries of the domain are displaced so as to change the domain volume okay but ଯେତେବେଳେ এই magnetic field ର value ଟା ଆହୁରି strong ହେବ in the strong magnetic fields the magnetization changes by means of rotation ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା ଏଇ डायरेक्शन ରେ ଥିଲା ଏବେ ପୁରା रोटेट करिगला ओके आहुरी भल से आमे आकु या विषय रे देखिबा सो एठी रोटेशन हो जाउची ए जो डोमेन रो जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर रो ओके इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन सो टिपिकली आकु जेतोळे हम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूछु ताले गोटे लास्ट रे सैचुरेशन रीजन आसुची ओके सो प्रथमे डिस्प्लेसमेंट होउची डोमेन बाउंड्री रो तापरे रोटेशन होउची तापरे सैचुरेशन रीजन रे पहुंची जाउची सो टिपिकली the magnetization curve of a virgin specimen is shown in this figure and it is indicating that the predominant process is taking place in the different regions okay so गोटे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आमे जेतेबेले गोटे मैग्नेटिक फील्ड रखिबा as you can see in this figure एटा हला फर्स्ट फिगर टा नॉन मैग्नेटाइज बा in the absence of magnetic field so एठी डोमेन भितरे जो मैग्नेटिक मोमेंट गुडा दे आर randomly oriented तापरे जेतेबेले आमे गोटे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूछु ताले सपोज आमे एठी तळु ऊपर को अप्लाई करूछु मैग्नेटिक फील्ड सो एठी बाउंड्री डिस्प्लेसमेंट हबो डोमेन रो माने जेतेबेले गोटे एठी ए जो सेकंड फिगर रे आमे गोटे स्मॉल स्ट्रेंथ रो गोटे वीक मैग्नेटिक फील्ड जदी अप्लाई करिबा ताले देखो जो डोमेन रो मैग्नेटिक मोमेंट ए डोमेन रो मैग्नेटिक मोमेंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड अच्छी तेणु यार साइज टा बढ़िबो ओके आउ यार साइज टा बढ़िबो केमती एट द एक्सपेंस ऑफ द साइज ऑफ अदर डोमेन्स ओके सो अदर डोमेन जोथिरे कि सेमानकर मैग्नेटिक मोमेंट along the direction बा parallel to the applied field नुहे तांकर साइज टा कमी कमी जीवो ओके अच्छा पुणी जदि आमे एई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रो स्ट्रेंथ को इंक्रीज करिबा ताहले the magnetization will increase due to further growth in the size of the domains by further displacement of boundaries okay so kaharo boundary displacement habo of the domains which are having the magnetization in the direction of your applied field okay while the size of the domain having magnetic moment डायरेक्शन ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड माने ए जो छोटियाटा ओके यार साइज पूरा कमी जीवो ओके डिक्रीज करी जीवो ओके सो द प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल ऑल द फेवरेबली ओरिएंटेड डोमेन्स ओके एटा जो फेवरेबली माने एटा ही फेवरेबली ओके जोटा along the direction बा पैरेलल अछि सो ऑल द फेवरेबली ओरिएंटेड डोमेन्स अटेन मैक्सिमम वॉल्यूम यार गोटे मैक्सिमम वॉल्यूम आसीबा पर्यंत एई प्रोसेसटा कंटिन्यू करिबो and at this stage each domain is still magnetized but all the domains are not in the direction of applied field and the magnetization of the sample is still less than the maximum value and it can attain a saturation magnetization जेमती हमें ऊपरे ग्राफ रे देखिला तापरे थर्ड केस को देखो एटा होची डोमेन रो रोटेशन को एटा शो करूची देखो सेकेंड फिगर रे आमे जो देखुतला डिस्प्लेसमेंट होतला डोमेन बाउंड्री रो जेतेबेले आमे गोटे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोतला किंतु सेही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रो स्ट्रेंथ बहुत कम थिला जदि यार स्ट्रेंथ को आमे फर्दर इंक्रीज करिबा ताहले कोन हबो देखो एई जेते सब मैग्नेटिक मोमेंट जार डायरेक्शन टा along the direction of applied field नथिला ओके से माने एबे रोटेट करि जिवे ओके रोटेट करि जिवे along the direction of
applied magnetic field. Okay, so we can say all the domains are oriented in the direction of applied field when we are increasing the strength of the applied magnetic field. Okay, so that the magnetization of the sample becomes maximum at this stage. ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ maximum value କୁ ଆମେ saturation magnetization बोलिकी କହିବା। so या ପରେ ଯଦି further ଆମେ magnetic field କୁ increase कले भी magnetization टा constant ରହିବ। okay, so ଏଠି figure ରେ ମୁଁ ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ବୁଝେଇଲି। so ଏଠି ଇଏ କହୁଛି ଯେ ଆଉ ପରେ ଯେତେ ଇନକ୍ରିଜ କରିବା ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଜେସନର ଭ୍ୟାଲୁଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଓକେ, ନାଉ ଇଫ୍ the external magnetic field is decreased, then the magnetization of the sample also decreases, but not in the same proportion as was during the magnetization of the specimen। ତା ମାନେ ଏବେ जो डोमेन माने थिले दे विल नॉट रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। ओके, पूरा पूरी वापस सही समान पोजीशन को आउ आसीबे नहीं जेतेबेले हमें मैग्नेटिक फील्ड को पुणी डिक्रीज करिबा। ओके, सो ऑन कंप्लीट रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ताले डोमेन रो सही ओरिजिनल पोजीशन रहइबो नाही, thus the material becomes permanent magnet। okay, after removal of external magnetic field। okay, finally let us see the evidence in support of this domain theory। एठी दुईटा पॉइंट लिखा ହେଇଛି। first कहूची it is observed that when oil with a suspension of fine particles of ferromagnetic material is applied to ferromagnetic substance, okay, fine particles ba powder form re ame nei jiba, then the particles of ferromagnetic powder collects on the domain boundaries as magnetic field is non uniform there। okay, domain boundary रे जते सब powder particle माने collect हेबे because सेठी तमरो magnetic field टा non uniform थिबो। तापरे सेकंड पॉइंट रे कहूची मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन माने कोन, एटा होची the change in size of the ferromagnetic substance on being subjected to the magnetic field। एटा भी गोटे evidence in support of this domain theory of ferromagnetism। okay, Thank you.